हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट हमने देखा है ना, सिंगलेट कार्बीन ट्रिपलेट कार्बीन को हमने कंपेयर भी किया और अंडरस्टैंड किया कि ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट कार्बीन से, बट इन केस ऑफ आलू कार्बीन ओके सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। अभी नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड दिस नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट इज बेंजाइन। तो बेंजाइन का थोड़ा सा मतलब बॉन्डिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बेंजाइन। फिफ्थ रिएक्शन तो मोर डिटेलिंग करेंगे जब भी हम इसके रिएक्शन देखेंगे। This is what is benzyne. So this is 1,2 dihydrobenzene. जिसको हम क्या कहते हैं बेंजाइन। इसमें 2 H कम है, ये 2 बार। This is formula wise it is C6H4। ये साथ explaining कि ये जो एक abnormal सा pi bond यहाँ पे मैंने लिखा है वो कैसे बनता है, ओके वो हम समझने की कोशिश करेंगे। So this structure actually is like this। इसमें एक ऑर्बिटल फ्री है, एक एम्प्टी है और इनके बीच में ये एक abnormal सा pi bond है। I'll explain you why I call this bond as a abnormal pi। What is abnormal about this pi? तो इसका बॉन्डिंग समझाने के लिए मैं इसका आपको प्रिपरेशन समझाती हूँ। हाउ डू वी प्रिपेयर? ये प्रिपेयर करने के लिए सपोज आई एम स्टार्टिंग विद क्लोरोबेंजीन एंड आई एम ट्रीटिंग क्लोरोबेंजीन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। Yes, this is chlorobenzene and it is treated with very small base. So what the base will do? Base will extract a hydrogen. Base एक hydrogen जो acidic है इसको extract करेगा। फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये भी चला जाएगा। So this is the basic reaction. Now I will explain you orbital wise picture so that I can explain you the bonding. तो इस पिक्चर में आपको जो प्रोडक्ट है वो बेंजाइन है वो समझाने के लिए okay I am discussing the hybridization of the carbons involved in the bond. तो ओरिजिनल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये जो दो कार्बन है the carbon here and carbon here is sp2 hybridized a typical कार्बन ऑफ बेंजीन और जिसमें एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो है यहाँ पे H के साथ बॉन्डेड देयर वाज अ बॉन्ड बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड H और ये बॉन्ड टूट गया, ये H चला गया, बट व्हेन दिस H इज गोइंग okay it is leaving both the electrons of the bond okay in this sp2 hybrid। तो ये जो H यहाँ पे चला जा रहा है H is going okay as electrophile leaving behind both the electrons। दोनों इलेक्ट्रॉन को पीछे छोड़ के चला जा रहा है और यहाँ पे ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, it is overlapped with orbital from chlorine। यहाँ पे क्लोरीन है तो जब भी क्लोरीन चला जाएगा what is the point of difference? क्लोरीन चला जाएगा तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला जाएगा
तो ये दोनों जो ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ किए हैं बोर्ड पे, both these orbitals are sp2 hybrid orbitals. ये दोनों sp2 hybrid orbitals हैं और इन sp2 hybrid orbitals में तो ये भी sp2 hybrid orbital है, ये भी sp2 hybrid orbital. पर जो ग्रुप्स एलिमिनेट हो गए हैं उसमें when H was going, H left the two electrons, kept it with carbon, and when chlorine was going, chlorine took away two electrons from carbon. And then we are having these two sp2 hybrid orbitals next to each other. One is full, another is empty. एक में तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एम्प्टी है. तो इन दोनों के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग से ये तीसरा वाला पाई बॉन्ड फॉर्म होगा. So how is this pi bond getting formed? This pi bond is getting formed due to sp2 hybrid orbital overlapping with another sp2 hybrid orbital. Okay, is this a sigma bond? No, this is a pi bond. Why we say this is a pi bond? This is a pi bond because it is formed due to sidewise overlap. तो ये बॉन्ड को abnormal क्यों कहते हैं? Because this bond is due to overlap between two sp2 hybrid orbitals and a lateral overlap. Giving us a pi. So what is abnormal here? The abnormal here is कि hybrid orbital usually overlap करके sigma bond बनाती है, but यहाँ पे hybrid orbital overlap करके क्या कौन सा bond बन गया है? pi bond. तो ये बेंजाइन का abnormal है. Obviously ये stable है नहीं, highly stable तो हो ही नहीं सकते इसको. Reaction में ये जो bond है वो quickly break होके हमको क्या मिलेगा? Product. ये break होते बाद okay, either the electrons can get transferred on this orbital or the electron can get transferred on another orbital. और फिर कैसे product को लिखना है is what I will teach you, okay, when we will do reactions of it. But I just explain you the basic form. इसमें जब भी ऐसे स्ट्रक्चर देखिए क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो दिक्कत ये होती है कि जब भी आप ये दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखते हो, so you feel that the hybridization of carbon is sp. इसके hybridization पे क्वेश्चन आता है, तो ये जो दो कार्बन है जिनके बीच में हमने ये abnormal सा बॉन्ड फॉर्म किया है, इनका hybridization sp नहीं है. They are sp2 hybridized two carbons, okay, which are laterally overlapping. Their hybrid orbitals are laterally overlapping to form this pi bond. So I hope the hybridization part and the bonding part is clear. Now what is a benzene? It's a neutral reactive intermediate. Okay, neutral reactive intermediate. Benzene is a neutral no charge reactive intermediate. ये कैसे बन गया benzene? Okay, it is derived from benzene ring by removing two substituents at ortho position. So I'm just a little bit writing about it. ये ऑर्थो ही होने चाहिए, नेबरिंग ही होनी चाहिए. और
कैसे निकल रहे हैं? One is going as electrophile, मतलब leaving behind two electrons. Okay, from ortho position in the form of one as electrophile and another as nucleophile. जो electrophile है, that is leaving behind two electrons, and that is what is getting distributed between the two orbitals. So by removing two substituents from ortho position, one as electrophile and one as और जो दो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो दो ऑर्बिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. Okay, so this is our next intermediate that we discussed, that is benzyne. अभी आगे का इंटरमीडिएट देखते हैं और इसका नाम है नाइट्रीन्स. इसको इमिडोजीन्स भी कहते हैं. And this is a nitrogen analogues of carbene. Okay, so nitrene again is a neutral intermediate. वो neutral intermediate है, but ये नाइट्रोजन वाला इंटरमीडिएट है. यहाँ पे कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, नाइट्रोजन इन्वॉल्व है. So how do I write or represent nitrene? Nitrene में हम कुछ ऐसे R N एक लोन पेयर है. ओके, और दो इलेक्ट्रॉन्स आइदर पेयर होते हैं या दो इलेक्ट्रॉन अलग ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं. ओके, तो नाइट्रीन के भी कार्बन के जैसे दो टाइप होंगे, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन, बेस्ड ऑन द टू इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये जो मैंने दो पेयर लिखे इसमें से एक हमेशा लोन पेयर, one is lone pair, and this another can be paired or unpaired. तो ये जो दो टाइप है अभी हमने कार्बन में देखे, यहाँ पे भी वैसा ही है. अगर पेयर है तो वो हो जाएगा सिंगलेट नाइट्रीन, और ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो वो हो जाएगा ट्रिपलेट नाइट्रीन. These are the two types. ट्रिपलेट नाइट्रीन अगर मुझे आपको बताना है तो ट्रिपलेट नाइट्रीन में sp ऑर्बिटल है हाइड्रेट, और उसी में ये दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड sp है अपनी उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज ट्रिपलेट. एंड व्हाट विल बी सिंगलेट? ये सिंगलेट में वही अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एज लोन पेयर. ओके, और एक एमटीपी भी रहेगा. ये होगा so quite similar to what we saw in case of carbenes. Okay, it's a neutral nitrogen, highly reactive, and it's an electron deficient species. It acts as electrophile. Okay, so neutral है, highly reactive है, and it mainly acts as electrophile.
so what discussion is over is we have finished discussing about reaction intermediates. हमने reaction intermediates का discussion खत्म कर दिया. अभी हम क्या करेंगे इसके आगे we will start discussing the acid base concept. Acidity और basicity को हम ज़्यादा समझेंगे. We will try to understand acidity and basicity more in detail. तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एसिड बेस के लिए ऑलरेडी 3 थियरीज सिखाए गए हैं टू डिफाइन एसिडिटी एंड बेसिसिटी. सो आई वोंट बी रिपीटिंग दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आई अज्यूम दैट कि वो तीनों थियरीज एसिडिटी और बेसिसिटी के आपको आते हैं. जैसे कि अरेनियस कांसेप्ट है एसिडिटी बेसिसिटी का, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कांसेप्ट है एसिडिटी बेसिसिटी के लिए, और लुईस एसिड और लुईस बेस कांसेप्ट. सो आई अज्यूम दैट all the definitions and all the variations of an acid and a base. And on that assumption, I start discussing now acidity in general. Okay, for us to understand the question where we have to arrange a compound in order of its acidic strength, or we have to arrange a compound in order of its basic strength. तो अभी इसके आगे हम ये वाला डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. What I have already finished is reaction intermediate. तो reaction intermediate के साथ I will say मैंने GOC का पार्ट 2 खत्म कर दिया. I finished teaching GOC part 2 with you, and I will start teaching GOC part 3 now. तो ये थर्ड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? ये थर्ड पार्ट में हम एसिडिटी और बेसिसिटी को डिस्कस करेंगे. We will mainly discuss acidity and basicity. So I first start discussing with you acidic strength of a compound. What are the ways of understanding acidic strength of a compound? And then I will take different functional groups and I will compare, explain acidity of those functional groups. And then a similar exercise we will do for basicity. So in general, we say a compound which can donate H plus is acid, है ना? जो compound H plus को donate करता है, वो acid है. Say for example, I take HA. Okay, I'm taking this a weak acid. Then it will have this equilibrium established in its solution. It will donate H plus. And then I will get this conjugate base of an acid, and in the process water will become basic. इस weak acid का A minus क्या हो गया? Conjugate base हो गया. Now I can always calculate equilibrium constant, equilibrium for this reaction, which will be concentration of A minus into concentration of H3O plus upon concentration of HA into concentration of water.
So I will write the new constant here, Ka. Ka is your dissociation constant for acid. है ना, ये तो आपने सब केमिकल इक्विलिब्रियम में कर ही लिया है ना. Okay, so Ka will be this. अभी डिस्कस करते हैं कैसे समझेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स, ओके, दैट विल मेक अस अंडरस्टैंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड. इसका एसिडिक स्ट्रेंथ HA का हमको कैसे समझना है. तो फिजिकल केमिस्ट्री में, आयोनिक में, अगर मुझे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए तो आई विल से द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड is directly proportional to concentration of H3O plus or directly proportional to Ka. Higher is the Ka, more acidic is this acid. Or we can calculate pH and we will say acidic strength is inversely proportional to pH, or we can calculate pKa and acidic strength is inversely proportional to pKa. So these are the basic things that are taught to you in physical chemistry. आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर इसमें से कोई भी नंबर आपके पास है एसिड्स का, तो आप उसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे अच्छे से कमेंट कर सकते. Now what kind of problems we are going to get in organic chemistry? ऑर्गेनिक में कैसे प्रॉब्लम? ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम में कहीं पे भी नंबर नहीं होगा. ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम A is without number, है ना. ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम में there is no number. Then how do I know which acid is more acidic? Okay, when I say I need more concentration of H3O plus, so when H3O plus concentration is more, obviously A minus का concentration भी ज़्यादा होगा. So if this reaction is more in forward direction, that is going to make it more acidic. And then in organic, instead of concentration, we are going to talk about the stability of A minus when the reaction will be more in forward direction, when A minus is stable. So we will check the structure of A minus and any factor, anything that is going to stabilize A minus is going to make an acid more acidic, and any factor that is not going to stabilize A minus is going to make this acid less acidic. तो अभी ऑर्गेनिक के लिए हम कहेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एसिड की, that will be directly proportional to stability of A minus. Any factor that is making A minus stable, conjugate base stable, that will push the equilibrium on the right, that will produce more H3O plus, and that will make the compound more acidic. Okay, और acidity किस पे डिपेंड करते हैं? कुछ फैक्टर्स को, कौन सा फैक्टर A माइनस को स्टेबलाइज करेगा? ऑब्वियसली EWG और A माइनस. जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे on A minus, that will stabilize, that will make it more acidic. और अगर EDG है तो that will make it less acidic. है ना. और भी दो फैक्टर्स है, मैं लिख देती हूँ, बट एग्जांपल्स करवाते वक्त इनको मैं अच्छे से समझाऊंगी. Your acidity is also directly proportional to electronegativity,
एंड साइज ऑल्सो। तो ये दो फैक्टर्स समझा दूंगी, बाद में हम लिखेंगे। तो ईडब्ल्यूजी और ईडीजी तो अभी समझ में आ रहा है, राइट? उसके बेसिस पे हम आगे बढ़े। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मुझे स्टेबिलाईजेशन ऑफ क्या देखना है, ए माइनस देखना है। अभी पहला सिंपल सा एग्जांपल, आई टेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड and want to compare its acidic strength, say with phenol, and say with alcohol. What do we have to do? We have to check their conjugate bases. And the one which has a more stable conjugate base, that is what is going to make it what more stable as per stability of conjugate base. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये तीन कंपाउंड है जिनको मुझे एसिडिटी ऑर्डर समझनी है। तो मैं सबके पहले कंजुगेट बेस लिखूंगी। कार्बोक्सिलेट हो गया, ये फिनॉक्साइड हो गया, और ये अल्कोक्साइड। ओके, ये तीन कंजुगेट बेस है। अभी इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी देखते हैं। तो अल्कोक्साइड में तो प्लस आई आ रहा है, और प्लस आई से स्टेबिलिटी घटेगी, विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी होगी। फिनॉल में क्या है, फिनॉल में देयर इज अ रेजोनेंस, है ना? तो फिनॉल का जो कार्बोक्सिलेट जो कंजुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, एंड आई कैन राइट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन है, इसका जो कंजुगेट बेस है वो भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। अभी फिनॉक्साइड और इसमें क्या फर्क है, इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे ना, वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कार्बोक्सिलेट में द resonating structures, yeah, carboxylate में the conjugate base is stabilized by resonance. But what kind of resonance? Identical resonating structure वाला। Phenoxide में भी there is a resonance. What kind of resonance? Non-identical resonating structure वाला। So when I am comparing a identical resonating structure and non-identical resonating structure, what is more stable? A identical resonating structure. तो इन तीनों के स्टेबिलिटी की ये ऑर्डर रहेगी। दिस इज आई एम राइटिंग, ये मैंने क्या लिख दिया, स्टेबिलिटी ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस। ये इनके कंजुगेट बेस की मैंने स्टेबिलिटी लिखी। तो जो स्टेबिलिटी है कंजुगेट बेस की, वही ऑर्डर किसकी आ जाती है, acidic strength की। Your acidic strength has the same order as that of stability. और इसके लिए फिर हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो more acidic than phenol and more acidic than alcohol होता है। So this is their acidity. So you will see many cases, many examples, but basically we have to check the stability of conjugate base. Any factor stabilizing a conjugate base should make an acid more acid. So I am giving some examples now. Okay, we will understand the factors affecting acidic strength with the clarity by solving various examples. हम ये various examples से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? So I am clearing this side of it.
गिविंग सम बेसिक एग्जांपल्स टू सॉल्व। तो ये पहला एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, है ना। अभी दूसरा, और हर जगह पे हमको कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी समझनी है और फिर एसिडिटी की ऑर्डर एवरीवेयर से। पहला जो एग्जांपल मैंने दिया है एसिडिटी के लिए, so I'm writing the corresponding conjugate bases F minus, Cl minus, Br minus and I minus, है ना। These are my corresponding conjugate bases. अभी इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगा है, व्हाट इज द फैक्टर। ओके, यहाँ पे जो बिगर आयन है ये सारे हाइड्रोजन है। सो बेसिकली आई सेड आई एम गोइंग टू राइट टू फैक्टर्स हियर। तो एक है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ए माइनस। ए माइनस जितना लार्जर इन साइज होगा उतना वो स्टेबल होगा। बट ये साइज हम कहाँ देखते हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन अ ग्रुप। आपकी कंपैरिजन एक ग्रुप के स्पीशीज के बीच में। So F minus, Cl minus, Br minus and I minus, they are in a group, so their electronegativity is comparable. So what will matter is size, and the one which is bigger in size, जिसकी size बड़ी होती है, उसपे नेगेटिव चार्ज अच्छे से डिस्पर्स होगा। More is the charge dispersal, okay, more is the stability। जितना चार्ज डिस्पर्सल ज्यादा है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसमें कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। और जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही क्या हो जाएगा, आपके एसिड के एसिडिटी का ऑर्डर। This is the order of acidity. Okay, so I explained you acidity order, I explained you stability order. अभी इससे हम बेसिसिटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं। किसकी बेसिसिटी, कंजुगेट बेस की बेसिसिटी, by using a simple rule that is taught to you in again physical chemistry. जो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसका कंजुगेट बेस वीक होता है, और जो एसिड वीक होता है उसका कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये कंजुगेट बेस की अगर हमको बेसिसिटी ऑर्डर लगानी है तो F minus is more basic than Cl minus and Br minus and I minus. This is their basicity order. Let us understand the next case. तो नेक्स्ट केस में भी क्या करना है हमको, कंजुगेट बेस में। तो यहाँ पे F माइनस, यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे NH2 माइनस और यहाँ पे CH3 माइनस। So what will matter here, okay, is the electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैटर करेगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है या वो कंजुगेट बेस मोर स्टेबल। So I write one more factor here and that is electronegativity. Your acidity is directly proportional to electronegativity of A minus.
But when we check this, not in a group, in a period, अभी ये जो मैं कंपेयर कर रही हूँ इनके साइजेस में ड्रास्टिक फर्क नहीं है, ओके, बट their electronegativity is drastically changing, but the difference in size is what? Negligible. तो in a period electronegativity क्यों देखते हैं? क्योंकि साइज में जो फर्क होता है वो negligible होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो फर्क होता है वो ज्यादा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, so which has more electronegativity, F minus will have more electronegativity than OH minus, then NH2 minus, and then CH3 minus. Okay, this is the electronegativity order. And then this is the stability order of a conjugate base. A in conjugate base की stability order है. And what is the acidity order? जिसका conjugate base most stable है वो acid more acidic है. So this is the acidity order. And we can always write the basicity order also here. So which conjugate base is most basic? That will be CH3 minus. Strong acid का conjugate base होता है वो weak होता है और weak acid का conjugate base जो होता है वो strong होता है. So this is the basicity order. Is that clear? तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ओके, जिसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. I'm giving some more examples. Understanding acidic strength of say hydrocarbons. कुछ हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स देती हूँ. Alkane, alkene, and alkyne. You will understand and compare the acidic strength. What is more acidic? Yeah. Just say example. Next example, I am taking this compound. I'm labeling this hydrogen as A type, this as B type, and this as C type. करना क्या है? Arrange the acidic strength. But give the acidic strength of HA, HB, and HC. ये आपका प्रॉब्लम नंबर 4 था. यहाँ पे ये आपका प्रॉब्लम नंबर 5 है. तो अगर ये कंपाउंड को एक H+ अगर यूज करना है तो वो कौन सा होगा?
फिर दूसरा और फिर तीसरा, सबके बारे में बताओ। और एक एग्जांपल देखिए। So we need to compare by removing one of this edge. यहाँ पे भी हमको वही करना है. I will write the corresponding conjugate basis. We will understand which conjugate base is more stable. और जो conjugate base more stable होगा वो corresponding hydrocarbon ज्यादा acidic होगा. Obviously यहाँ पे electronegativity से जाएंगे, है ना. यहाँ पे C माइनस sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है. So this is more stable than this and this. तो ये हो गई conjugate base की stability की order. और जो हमारी stability की order है वही किसकी order है, acidity की order. The same is the acidity order. Is that clear? Next. So I need to understand is the A type hydrogens more acidic or the B type hydrogens or the C type. What I do is I write the three corresponding conjugate bases. One by removing A type of hydrogens. A type का hydrogen निकालेंगे तो ये वाला. इसमें मैंने HA निकाला है, ये HA वाला है ना. B टाइप का हाइड्रोजन निकालूंगी, ये कंजुगेट बेस. अब C टाइप का निकालेंगे, तो मैंने तीनों कंजुगेट बेस देख ली.
तो अब इसमें क्लैरिटी से दिख रहा है कि A टाइप में there is resonance and B type में also this is in conjugation, but not easy. So undoubtedly this hydrogen is less acidic, मतलब possibility of this getting lost, this getting donated is very what less. Comparatively HA वाला और HB वाला ज्यादा है. उसमें कौन सा एसिडिक है? यहाँ पे तुम्हारा कार्बन आयन प्राइमरी होता है और यहाँ पे वो सेकेंडरी हो जाता है, and that is what will make HA more acidic than HB and then HC. तो ये तीन हाइड्रोजन्स में this is the acidity order that we will follow. तो अगर इस कंपाउंड से एक H प्लस निकालना होगा तो वो कौन सा वाला होगा? A टाइप का होगा. That is what is going to be most. अगला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, इसमें भी क्या करना है? वही करना है, जो लेबल्ड H है वो निकालो. जो फॉर्म हो रहा है कंजुगेट बेस करस्पॉन्डिंग, उसकी एसिडिटी अंडरस्टैंड और उसकी स्टेबिलिटी अंडरस्टैंड, and from that we can understand the acidity. So I will get this here. And this here. So let us understand the stability of conjugate bases. इसमें ये वाला जो है, देखो ये एरोमेटिक हो गया अपना, और ये वाला कंजुगेट बेस एंटी एरोमेटिक हो गया. इन दोनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक है, सबसे लीस्ट हो गया एंटी एरोमेटिक. ये दोनों जो नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पे there is a resonance and here there is no resonance. So if I am labeling them as 1, 2, 3, 4, okay, what is most stable and most acidic is 3. सबसे ऊपर स्टेबल, सबसे ज्यादा एसिडिक 3. फिर आएगा 1 क्योंकि कंजुगेशन है, फिर आएगा 2. 1 and 2 will come in between aromatic and anti-aromatic as they are non-aromatic, and at the end will come 4. तो यही इनकी एसिडिटी ऑर्डर है, एसिड की, और यही करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर. Right, this is what it is. Okay, so is this clear? है ना? अभी तो मैंने बेसिक एसिडिटी का बेसिक समझा दिया. आई मेड यू अंडरस्टूड बेसिक्स ऑफ एसिडिटी. नाउ व्हाट नेक्स्ट? अगले लेक्चर से एक्चुअल फंक्शनल ग्रुप लेके उसके एसिडिक स्ट्रेंथ हम समझेंगे. सो आई विल डिस्कस अल्कोहल, आई विल डिस्कस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, आई विल डिस्कस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरियस थिंग्स इन्वॉल्वड देयर. ओके, कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, है ना, ऐसे करके, और बहुत कुछ हमको एसिडिटी में पढ़ना. तो अभी आगे के 1-2 लेक्चर इसमें हम रहेंगे. एसिडिटी समझने में 2 लेक्चर आगे के चले जाएंगे. So I will start with alcohol, carboxylic acid next lecture. That's it for today. See you everybody in the next lecture.